चलो भॉइस आसले पिले कि आसलो एबे स्वाति हेलो सर हेलो हेलो सस्मिता हेलो 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 समस्त को हेलो भॉइस आसरे तमें आसलो जे टिके बाकी मान को भी आनो तमें तो आसलो मैं जानली आसली सर हाँ ठीक कलु आसलु ब्लैक दिशुची नहीं तो टे समस्ते टे चेक करो तो समस्त ब्लैक दिशुची स्क्रीन व्हाइट दिशुथिबो ओके हाँ टिके ऑफ करके आउ थे चालू कर मामुनी जे ठीक आसबो नेट ऑफ करके आउ थे ऑन कर टिके फ्लाइट मोड करके आउ थे ऑन कर जे आसी जीवो ठीक चलो 5 जन 6 जन आसिले ए पर्यंत ओके हैला क्वेश्चन कला बेले जूम करवा किछ असुविधा नहीं एबे व्हाइट ही अच्छे स्क्रीन पहला किसी ग्रामर क्वेश्चन करवा किसी अल्प किसी क्वेश्चन ग्रामर करवा तापर प्रोज पोएट्री बाकीटा करवा नेक्स्ट आ गोटे काली गोटे दिन ना केवल ग्रामर उपर करवा काना कहूँ को मनोभगती बकाटी किए रे मनोभगती चलो ठीक है स्टार्ट करमा आउ टिके वेट करमा स्टार्ट करमा ना टिके वेट करमा को ऑलरेडी तो 5-6 मिनट हो गलान बाकी मान टिके सोई पड़ी थे आज तो क्रिकेट मैच नहीं न काली सीना मैच थिला कि परदिन मैच थिला सुमित अच्छा स्टार्ट करमा कहूँ ताले किसी ना तो 10-15टा तो आसवा कथा ना कहा के वेट करमा किए आसबार कह तो किए आसबे सियोर आसबे डाकवा भी पड़सी पढ़वा लगी चलो आम किसी ग्रामर क्वेश्चन करूँ तापर अन्य मैंने जॉइन हे तापर आम प्रोज पोएट्री बाकीटा मैंने करवा ठीक अच्छे चलो सबे जिते लोग अच्छो 7 जन अच्छो सबे येस टाइप करो तापर करवा चलो फटाफट येस टाइप करो तापर आम क्वेश्चन आलोचना करवा
चलो फटाफट सब यूज करो। मात्र 4 लोग कहछन, मात्र 4 जन ही कहछन स्टार्ट करिया पई। ओके ठीक अच्छे। ताहले पहला क्वेश्चन देख, जदि किसी आउट ऑफ सिलेबस थी कि तुम ना इंटरनल तो किसी नहीं एथर मु सब चेक कर देछि। ठीक अच्छे चलो एटा करो। आइडेंटिफाई द करेक्टली रिपोर्टेड वर्जन। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो या भीतर अच्छा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे केनटा ठीक है कह। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। The teacher said that the earth revolved around the sun. The teacher said that the earth revolves around the sun. The teacher told that the earth revolves around the sun. The teacher says the earth was revolving around the sun. या भितर ठीक है कह। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे ठीक अच्छे। सुस्मितार आसला पहला आंसर बी। चलो अन्य माने मामुने 1 बी सती ए बी डबल आंसर आसुची जीतु बकुल ए। देख द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये हूँ गोटे फैक्ट है सब फैक्ट गुड़ाक प्रेजेंट सिंपल थाए। तो प्रेजेंट सिंपलटा किसी चेंज हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कला बेले ठीक अच्छे। द टीचर सेड दैट अच्छा जो मैंने ए कहूँ देख ए रे कौन अच्छे कह देख द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड अराउंड ये V2 होती देख इडी लगी रिवॉल्व्ड है रिवॉल्व अच्छे है REVOLVED तो इडी लगी तो यहाँ V2 होती तो पास्ट टेंस हम ही ना। तो क्वेश्चन कौन अच्छी रिवॉल्व्स अच्छी तो जहाँ अच्छी से पूरा जहाँ क्वेश्चन जहाँ अच्छी जेहेतु यहाँ गोटे फैक्ट ठीक अच्छे जेहेतु यहाँ गोटे फैक्ट जहाँ अच्छी से ही रही। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन तो बी हम ठीक आंसर। जो मैंने ए कहते बुझीपार जो मैंने ए कहते बुझीपार ना नहीं जूम करबी नहीं क्लियर तो दिशुचे पूर्व क्लास रे जेनता क्लास करते तो एवं तो ठीक से सेटिंग तो करा जाउछि आ कण रहला असुविधा स्टार्ट ऑलरेडी हैला न स्टार्ट करन कण आंसर दियो हला ठीक अछि एटा बुझी हला जो माने ए कहउथिलो हला स्वाति हां सुमित ए कहउथिलो बुझी हला कि नहीं। तो एटा हो जोटे प्रेजेंट सिंपल रे थिबा सेंटेंस ठीक अछि। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन तो ताकू इनडायरेक्ट कला बेले कौन चेंजेस हम ना जहाँ अच्छी से केवल सेट दैट हो आउ इनवर्टेड कमा उठे द टीचर सेट दैट द अर्थ कण है बुझार असुविधा। तो द अर्थ पृथ्वी सूर्य को चारिपटे घूरे यहाँ गोटे यूनिवर्सल फैक्ट यहाँ गोटे फैक्ट प्रेजेंट सिंपल अच्छी। तो जो फैक्ट गुड़िक थाए सत्य घटना है पृथ्वी सूर्य को चारिपटे बुले यहाँ गोटे सत्य घटना ठीक अच्छे। तो जिते या स्पीच चेंज करा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ये कौन प्रकार परिवर्तन हेनी झापसा दिशुचे आउ कहा झापसा दिशुचे
तो कौन सी प्रकार चेंजेस हम ना ए खाली लकी के बोले अच्छा एबे बुझीगला नहीं जो मैंने ए कहूला आंसर बुझीगला प्रेजेंट सिंपल थिले पास्ट सिंपल ऐसी जाए प्रेजेंट सिंपल थिले जे ये जो वर्ड लिखा है इन सेंटेंस लिखा है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एटा गोटे फैक्ट कि नहीं एटा गोटे सत घटनार कौन प्रकार वर्ब चेंजेस हुए ना द अर्थ रिवॉल्व्स अच्छी तो से रिवॉल्व्स एका रहा रिवॉल्व हुए हम ना बुझीपाल ना एटा गोटे सत्य घटना प्रेजेंट सिंपल अच्छी किंतु एटा गोटे सत्य घटना ठीक अच्छे यूनिवर्सल ट्रुथ गोटे सूर्य चारिपटे पृथ्वी घूरे एटा गोटे सत्य घटना है ट्रुथ एटा गोटे फैक्ट तो एथिरे कौन प्रकार चेंजेस हुए ना खाली एटा गोटे फैक्ट एथिरे कौन प्रकार चेंजेस हुए ना हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ अच्छी यूनिवर्सल ट्रुथ एटा चेंज नहीं हुए ठीक अच्छे एथिरे अभुचार एते भी डिफिकल्ट न तो डाउट रोचे एथिरे सूर्य चारिपटे पृथ्वी घूरे एटा गोटे यूनिवर्सल फैक्ट तो एथिरे चेंजेस हुए ना तो जहाँ अच्छी से रहा पानी रे सोलो भासे एटा भी गोटे ट्रुथ फैक्ट सूर्य पूर्व दिग उदय हुए ये भी गोटे फैक्ट तो एथिरे कौन प्रकार चेंजेस हुए ना ठीक अच्छे नेक्स्ट 2 नंबर कर अच्छा ये गोटे क्वेश्चन रही जाए ये कर दियो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी व्हाई डिड द ग्रैंडमदर कैरी स्टेल चपातीस to give them to the village dogs, to eat them for breakfast, to feed the city sparrows, to give them to the poor. 2 नंबर चलो राकेश आसला प्रथम आंसर ए मामुनी ए तापर अन्य माने एटा गोटे क्वेश्चन रही जाए कर दियो तापर आपको ग्रामर केते राशि करबा सस्मिता ए प्रियंका कहीं गला चलो अन्य माने फटाफट कमेंट कर आके जीवा Why did grandmother carry stale chapatis? गे ए गला ए गला ए चलो समस्त ठीक अच्छे ऑप्शन ए हो ठीक आंसर ओके नेक्स्ट एटा करो चूज द करेक्ट पासिव फॉर्म अच्छा अच्छा ठीक अच्छे हाँ हाँ है ओके टिके नेटवर्क इश्यू थिला चलो एटा 3 नंबर आंसर को 3 नंबर सी 3 नंबर सी 3 नंबर सी स्वाति 3 नंबर सी अच्छा देखो ऑप्शन कौन अच्छी स्टीव जॉब्स इज फायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टीव जॉब्स हैड बीन फायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेयर फायर्ड बाय स्टीव जॉब्स तो यार ठीक आंसर हो 3 नंबर ऑप्शन सी जो मैंने कह ठीक कह तो स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाए तो स्टीव जॉब्स आग सामना को पड़े सामना को आसीज आग रही स्टीव जॉब्स तापर हैड बीन सॉरी वाज फायर्ड हम जेहेतु एटा अच्छी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फायर्ड अच्छी V2 अच्छी ठीक अच्छे समस्त ठीक अच्छे जो मैंने सी कहूँ आंसर ठीक अच्छे चलो 4 नंबर कर व्हिच मॉडल वर्ब एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ ओब्लिगेशन क्यों मॉडलटी स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ ओब्लिगेशन एक्सप्रेस करे स्टूडेंट्स डैश वेयर यूनिफॉर्म्स माइट मे कुड मस्ट एथरे स्ट्रॉन्ग रूल को मॉडलटा एक्सप्रेस करे को मॉडलटा बेसी स्ट्रॉन्ग रूल को एक्सप्रेस करे स्टूडेंट डैश वेयर यूनिफॉर्म्स स्टूडेंट माइट वेयर यूनिफॉर्म स्टूडेंट मे वेयर यूनिफॉर्म स्टूडेंट कुड लगे ना स्टूडेंट मस्ट वेयर यूनिफॉर्म आसीगला जीत बकुल 4
राकेश डी, स्वाति डी, मस्ट तापर अन्य माने को चलो जिते शीघ्र शीघ्र करवाटा। तो स्टूडेंट्स डैश वेयर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट मस्ट वेयर यूनिफॉर्म। जो मैंने मस्ट कहूँ मस्ट जो मैंने कहूँ ठीक कहूँ मस्ट हूँ गोटे स्ट्रंग रूल है, गोटे स्ट्रंग रूल स्टूडेंट मान पूरा बाध्य स्कूल से यूनिफॉर्म पिंधापी ठीक अच्छे। तो मस्ट एका लगवा है, स्टूडेंट मस्ट वेयर यूनिफॉर्म समस्त बाध्य से सब स्टूडेंट मैंने यूनिफॉर्म पिंधापी। ओके नेक्स्ट सिलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थे करेक्ट सेंटेंस को बाछिब। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए बुक, द न्यूज आर वेरी शॉकिंग, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। चलो यहाँ कर एथिरे कौ सेंटेंसटा ठीक अच्छे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अनुसार कौ सब्जेक्ट कौ सेंटेंसटा ठीक अच्छे। पांच नंबर बी कहूँ तापर अन्य माने दिनेश प्रधान टाइपिंग एरर तापर पांच नंबर बी अन्य माने चलो अन्य माने कमेंट करो शीघ्र शीघ्र बी है। अच्छा अन्य माने आई एम गोइंग टू टॉयलेट। अच्छा टॉयलेट जीवु जा बी समस्त बी। अच्छा देख ऑप्शन देख प्रथम ऑप्शन को जाओ ऑप्शन ए को जाओ ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव ए बुक। अच्छा ये ईच वार्डटा अच्छे ईच माने प्रत्येक ईच माने जन को बुझेब है प्रत्येक स्टूडेंट। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट माने वन है सिंगुलर हो जाए ठीक अच्छे। ईच ऑफ द स्टूडेंट माने सिंगुलर हो। अच्छा सिंगुलर मान पाखे हाव लगे ना आम जाचे तो ये हाफटा लगी जेहेतु ये भूल अच्छी ये हाज जदि लगी था ठीक होता। ओके ताले पहला सेंटेंसटा प्रथम सेंटेंसटा भूल अच्छी। ओके नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस को चलो सेकेंड ऑप्शन को जाओ द न्यूज आर वेरी शॉकिंग, द न्यूज आर वेरी शॉकिंग ठीक अच्छे। न्यूज खबर आउे न्यूजटा सब सिंगुलर जो न्यूज लिखाई खबर न्यूज सब सिंगुलर है ठीक अच्छे। न्यूज सब सिंगुलर ही हम सिंगुलर पाखे आर लगे ना है द न्यूज इज वेरी शॉकिंग ठीक आंसर होची द न्यूज इज वेरी शॉकिंग। चलो थर्ड को जाओ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस हम ना हाँ ठीक अच्छे। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस यहाँ ही ठीक आंसर ठीक अच्छे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस है स्लो एंड स्टेडी यहाँ गोटे कहावत अच्छे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस जो आम ओडिया कहते धीर पानी पथर काटे से परिका गोटे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेट तो सी हूँ राइट आंसर है। डी डी सेंटेंस को देखी दियो आमर सीटा है ठीक आंसर आम पाईगले। ऑप्शन ए आउ बी कहीं हेनी बुझीपार ऑप्शन डी के देख डी रे देख कौन भूल अच्छी ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर है दीटा वार्ड थे भी ब्रेड आउ बटर यहाँ दीटा वार्ड थे भी यहाँ पेयर होगी सब आसे ब्रेड सहित आम बटर मिसेक ही खाऊ है। तो यहाँ इज आर लगे ना से जगह तो आर जगह इज लगे यहाँ ठीक सेंटेंस हम ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ भी भूल अच्छी चार नंबर भूल अच्छे ठीक आंसर अच्छे कौटा सी ए बुझीपार समस्ते सी आंसर। ओके किसी डाउट नथिबो कारण जानी होचे थर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एटा होचे ठीक आंसर। ऑप्शन ए आउ बी हम ना कहीं हम ना यहाँ मन रखी था यही परीक्षा भी यही कनसेप्ट क्लियर थे अलग क्वेश्चन भी कर। ओके नेक्स्ट 6 नंबर को फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सेंटेंस करेक्ट टेंस बाय द टाइम द प्रीस्ट अराइव्ड द सिक मैन डैश। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट टेंस लगाओ
बाय द टाइम द प्रिस्ट अराइव्ड जेतेबेले प्रिस्ट माने पूजक पूजक पहुँचिले द सिक मैन असुस्थ लोकटी डैश डाएड वाज डाइंग हाड डाएड हाज डाएड। चलो ऑप्शन सी आसुची समस्त सी मामुनि सी दिनेश प्रधान सी राकेश सी स्वाति सी बारिक सी। चलो अन्य माने देख एथरे कौन सी देख कॉन्सेप्ट टिके बुझ। चलो बाय द टाइम द प्रिस्ट अराइव जेतेबेले पूजक पहुँचिले अराइव्ड अछि इडी लागिछि माने पहुँचिले द सिक मैन असुस्थ लोकटी मरी जाइथिला। ठीक अछि तो दीटा को इवेंट पास्ट रे होछि। ठीक अछि तो प्रिस्ट पूजक जेतेबेले पहुँचिले असुस्थ लोकटी मरी जाइथिला डाएड हबो नाही वाज डाइंग माने मरुथिला तो हुए नहीं हैला। हाज डाइड ना हाड डाइड ना हाज डाइड प्रेजेंट को अछि एटा प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि एटा हाज डाइड तो प्रेजेंट परफेक्ट हबो नाही काहे कि दीटा के इवेंट अतीत रे होछि तो हार्ड डाइड होछि ठीक आंसर हैला। चलो सी समस्तकर ठीक अछि हैला ठीक आंसर। चलो नेक्स्ट 7 नंबर व्हाट इज द एंटोनोमी ऑफ एंशिएंट एंशिएंट रे एंटोनोमी कोन कह एंटिक ओल्ड हिस्टोरिकल मॉडर्न एंशिएंट रो विपरीत शब्द एंटोनोमी सिनोनिम एंटोनोमी जानथिबो सिनोनिम एंटोनोमी जानथिबो को एंशिएंट एंशिएंट माने कोन ऑप्शन बी बी कहछि दिनेश प्रधान बी तापर अच्छा एंटोनोमी माने बुझी पारछ ना नहीं एंटोनोमी माने कोन एंटोनोमी माने होछि अपोजिट बा विपरीत एंटोनोमी माने होछि विपरीत। ठीक अछि एबे कर एंशिएंट रो विपरीत ओल्ड हेबा दिनेश प्रधान बी कहथुले बी ता उल्टी कर डी हे गला तो सुमित डी डी नहीं चलो ने माने डी देख एंटोनोमी माने कोन विपरीत शब्द एंशिएंट माने होछि पुराना एंशिएंट माने होछि पुराना बा पौराणिक एंशिएंट पुराना कालर हला अतीत रे तो एंशिएंट टाइम अतीत समय हला ठीक अछि तो अतीत रो एंशिएंट माने पुराना ठीक अछि तार ऑपोजिट हबा मॉडर्न। ठीक अछि जोने मॉडर्न डी ऑप्शन डी होछि राइट आंसर ओल्ड होछि ओल्ड नुहे ओल्ड तार सिनोनिम हे जीवो। ठीक अछि हां डी डी होछि ठीक आंसर। नेक्स्ट 8 नंबर करो चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड आई एम बिजी नाउ ही सेड आई एम बिजी नाउ ऑप्शन अच्छे देखो ही सेड दैट ही इज बिजी नाउ ही सेड दैट ही वाज बिजी नाउ ही सेड दैट ही वाज बिजी देन ही सेड दैट ही इज बिजी देन। चलो सहजा क्वेश्चन अच्छी करो ऑप्शन बी तापर ऑप्शन सी 8 नंबर बी ऑप्शन बी ऑप्शन सी सुमित सी ऑप्शन बी चलाने माने आठ नंबर सी चलो देखी दियो आंसर करुच्ची देख ही सेड आई एम बिजी नाउ एटा को आम इनडायरेक्ट स्पीच करवा ठीक अच्छे तो आई एम बिजी नाउ आई तो हो ही सेड दैट आग तो सेड पाखे दैट लगी ही सेड दैट चलो ये भी अच्छी ही सेड दैट एटी भी अच्छी ही सेड दैट एटी भी अच्छी ही सेड दैट ए जगह भी अच्छी ही सेड अच्छी तो 4 नंबरटा ही हम ना 4 नंबर कटिगला ठीक अच्छे ही सेड दैट ठीक अच्छे तापर आईटा हो ही तो सब जगह ही अच्छी ही सेड दैट ही अच्छा ही पाखे कौन लगे आई आम अच्छे आई एम बिजी अच्छा देखो ये प्रेजेंट अच्छे ठीक अच्छे ये पास्ट हो तो ये जो इजी अच्छे ही इज बिजी नाउ हम ना
है तो ये जगह अच्छे वाज ये जगह अच्छे वाज ऑप्शन बी रे भी वाज अच्छे ऑप्शन सी रे भी वाज अच्छे तापर वाज बीजी दुटा जगह अच्छे ठीक अच्छे तर नाउ नाउटा इनडायरेक्ट कला बेले नाउटा देन हो जाए तो ये भी नाउ लिखाई सी रे ऑप्शन बी रे लिखाई नाउ ही सेड दैट ही वाज बिजी नाउ तो क्वेश्चन नाउ अच्छी इनडायरेक्ट कला बेले डायरेक्ट स्पीच रे नाउ अच्छी इनडायरेक्ट कला बेले नाउटा कौन हो जाए नाउटा हो जाए देन ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी हो राइट आंसर जो मैंने सी कहूँ ऑप्शन ठीक हो ओके तो ये किसी अल्प 7-8टा क्वेश्चन थिला ग्रामर रो ठीक अच्छे एबे आमे करिबा प्रोज पोएट्री क्वेश्चन करबा ठीक अच्छे आम उल्टा जावा 60टा क्वेश्चन करबा आमे उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट करबा ठीक अच्छे एबे कर in the portrait of a lady, what was the grandmother primarily based on? The author's wife, the author's mother, the author's grandmother, the author's sister. चलो सहजा क्वेश्चन स्टार्ट करमा चलो फटाफट आंसर करो नेक्स्ट के जीवा हाँ चलो सस्मिता सी तापर अन्य माने सी सी 60 नंबर आम उल्टा 60टा क्वेश्चन करवा ठीक अच्छे काली 30टा करथिला 60टा गले करबा जीतु बोलছি जीतु तोर ग्रामर बेले तू कहीं जाइथिलु चलो अन्य माने सहजा क्वेश्चन अच्छे रे चलो अटेंड करो कमेंट करो आंसर माने तो राइट आंसर हो 60 नंबर हाँ सी जो मैंने भी सी कहूँ ठीक हो द ऑथर्स ग्रैंडमदर ओके नेक्स्ट इन द मैजिक ऑफ टीम वर्क व्हाट डज द क्राफ्ट मेंटालिटी रेफर टू क्राफ्ट मेंटालिटी माने कौन पुलिंग डाउन एनीवन हु ट्राइज टू सक्सीड वर्किंग टुगेदर लाइक ए कॉलोनी हेल्पिंग अदर्स क्लाइंब अप प्रोटेक्टिंग द लीडर एट ऑल कॉस्ट चलो 60 नंबर ऑप्शन सी थिला राइट आंसर थिला ऑप्शन सी जो माने कहथले एबे 59 नंबर कर 59 नंबर आंसर आसी गला ए राकेश ए अच्छा क्राफ्ट मेंटालिटी कंकोड़ा ना कि कंकोड़ा मेंटालिटी एटा कह जाए क्राफ्ट मेंटालिटी माने जी ऊपर को जाउथो ताको तळाडू घिचबे ना तळाडू टाणीबे ताको पुलिंग करबे तो ऑप्शन ए जो राइट आंसर ठीक अछि पुलिंग डाउन एनीवन हु ट्राई टू सक्सीड जे भी सफलता पई आगु जाउची ताको पछाडू टाणीबा ठीक अछि तो ए हूँ राइट आंसर ठीक अच्छे समस्त ठीक अच्छे नेक्स्ट द मंकी स्पाव वाज ए पीस ऑफ डैश ज्वेलरी स्टोन वुड कार्विंग ना ममीफाइड प तो मंकी स्पावटा कौन थिला खाऊले हाँ ठीक अच्छे खा न डी 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 मम्मी स्पाव माने सॉरी मंकी स्पाव खोजी मंकी स्पाव माने कौन मंकी स्पाव होची ममीफाइड प है ममीफाइड प ठीक अच्छे ऑप्शन डी जो मैंने कह ठीक कौच है ऑप्शन डी जो मैंने कह ठीक कौच चलो नेक्स्ट इन ऑन एग्जामिनेशन चर्चिल wrote his name and the number of the questions and then dash Churchill wrote his name and the number of the question and then wrote a long essay, a blot and several summations appeared on the paper. He left the room, he cheated. 57 आंसर आसीगलानी बी 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 चलो समस्त आंसर बी चलो बी ठीक आंसर बी द राइट आंसर ठीक अच्छे समस्त ठीक अच्छे जो मैंने बी कह नेक्स्ट व्हाट डिड द स्पैरो डू आफ्टर द ग्रैंडमदर्स बॉडी वाज कैरिड ऑफ दे stripped they ate the bread crumbs they flew away quietly they stayed there all night 56 रे करो What did the sparrows do after the grandmother's body was carried off? Sparrow man कौन कले? After the grandmother's body was carried off.
आंसर आसीगलानी सी 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 they flew and they flew away quietly they flew away quietly चलो समस्त आंसर ठीक अच्छे सी हूँ राइट आंसर ठीक अच्छे मैंने सी कौच ठीक कौच नेक्स्ट इन द मास्टर्स ऑफ द मिसिंग कैप झंडू वाज ए मंकी डॉग कैट सर्वेंट चलो सहजा क्वेश्चन कर स्पेलिंग ठीक अच्छे तेरे पिले 55 क्वेश्चन कर ए चलो ए आसीगला ना ए समस्त ए ओके ए माने मंकी ठीक अच्छे झंडू मैंने गोटे झंडू गोटे मंकी थी ओके ठीक अच्छे समस्त राइट आंसर समस्त ठीक अच्छे नेक्स्ट आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लिटिंग व्हाट डज आर्ट इज लॉन्ग मीन हियर आर्ट इज लॉन्ग या माने कौन पेंटिंग टेक्स टाइम लाइफ इज शॉर्ट नॉलेज और वर्क इज भास्ट टाइम इज स्लो या माने कौन को 54 आंसर आर्ट इज लॉन्ग या माने कौन चलो सतिर बोला क्वेश्चन आसला आंसर आसला सी अच्छा बी बी सी चलो अलग अलग आंसर कौच अलग अलग आंसर कौच ये आर्ट इज लॉन्ग रो माने कौन आर्ट इज लॉन्ग टाइम इज फ्लिटिंग आर्ट इज लॉन्ग या माने कौन देखो आर्ट इज लॉन्ग पेंटिंग टेक्स टाइम ये नुहे लाइफ इज शॉर्ट ये तार अर्थ नुह आर्ट इज लॉन्ग अर्थटा नुह तो ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर नॉलेज और वर्क इज भास्ट नॉलेज इज भास्ट है तो ऑप्शन सी मन रख ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर ए नुहे ए हूँ पेंटिंग टेस्ट टाइम या माने नुह आर्ट इज लॉन्ग माने या नुहे ठीक अच्छे ए नुहे नॉलेज इज भास्ट यार अर्थ ठीक अच्छे स्टीव जॉब्स से डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ डैश नेचर लाइफ मैनकाइंड साइंस स्टीव जॉब्स कहती डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ डैश डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ नेचर लाइफ मैनकाइंड साइंस चलो यार आंसर को ए बी 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 53 आंसर इन्वेंशन ऑफ 53 आंसर होची चलो अन्य माने आंसर करो 53 आंसर होची बी जो माने बी कहूच ठीक कहूच है डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ ओके नेक्स्ट हाउ मेनी पाउंड्स डिड द सर्जेंट मेजर से द फर्स्ट ओनर ऑफ द पॉ विश्ड फॉर इन हिज थर्ड विश हाँ तो केते पाउंड से चाहिए तार थर्ड विश रे फॉर इन हिज थर्ड विश 200 डेथ 150 आंसर आसीगला ए चलो समस्त ठीक अच्छे ए 52 आंसर ए 200 पाउंड ठीक है समस्त ठीक अच्छे आंसर ठीक अच्छे वेरी गुड तापर इन ए स्लम ऑफ लाइफ व्हाट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ व्हाट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ सक्सेस हार्डवर्क जॉय द ग्रेव लाइफ रो गोल केउटी नुहे सक्सेस हार्डवर्क जॉय द ग्रेव यार आंसर आसीगला डी 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 51 डी 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 चलो अन्य माने डी
चलो समस्तर ठीक अच्छे समस्तर ठीक अच्छे समस्तर ठीक अच्छे आंसर हूँ डी द ग्रेव है नॉट द गोल ऑफ लाइफ लाइफ गोल नुहे हूँ डेथ ओके ठीक अच्छे समस्त ठीक अच्छे 51 डी ठीक अच्छे चलो 50 क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट वांट टू रॉट इन द पोएम टेलीविजन पोएम रे रॉट द पोएट वांट टू रॉट माने कौन द बुक्स द टॉयज द फर्निचर द टेलीविजन सेट को कौन कह सुमित से फास्ट पर्सन थर्ड विश डेट थिला चलो ठीक तुम क्लीयर कर जेहेतु मुझे तुम से चैप्टर सहित टी अकाउंटेड नुहे मुझे चैप्टर टी देखनी भलसे पढ़ी तो मुझे क्वेश्चन ही बनई देती तुम ठीक से देखीदेव बही टी देखीदेव ठीक अच्छे ताले यार आंसर कर आम आंसर करदे है मत ग्रुप कह से क्वेश्चन कौन थी सरला कमेंट रे कहीदे आम ये चेक करदे ठीक अच्छे अच्छा समस्त डी 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 ए सस्मिता ए कहूँ सी पुणी आसला आंसर शिव प्रसाद डी रु सी हो गला व्हाट डज द पोएट वांट टू रॉट इन द पोएम टेलीविजन है से क्या रट करने चाहूँगे द बुक्स द टॉयज द फर्निचर द टेलीविजन सेट क्या तो ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर 50 नंबर आंसर हूँ डी द टेलीविजन सेट ठीक अच्छे द टेलीविजन सेट डी हूँ राइट आंसर अच्छा ये क्वेश्चन हाउ मेनी पाउंड्स थिला ठीक अच्छे ये क्वेश्चन रे हाउ मेनी पाउंड्स थिला हाउ मेनी पाउंड्स डिड द सर्जेंट मेजर से द फर्स्ट ओनर ऑफ द विश फॉर इन हिज थर्ड विश सर्जेंट मेजर कहती जे प्रथम ओनर टी तार थर्ड विश रे कौन मागी थिला हाउ मेनी पाउंड्स हुए तो टी क्वेश्चन मिस्टेक होता ही पारे जेहेतु हाउ मेनी पाउंड्स पचार तो 200 ही हम चलो यार 50 नंबर आंसर हूँ डी हाँ तो 50 नंबर आंसर हूँ डी द टेलीविजन सेट ओके 50 नंबर आंसर है डी तापर चलो नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन टिके कन्फ्यूजिंग अच्छे क्वेश्चन ओके ठीक अच्छे इन ऑन एग्जामिनेशन हु वाज द टीचर हु टॉट चर्चिल इंग्लिश चर्चिल को किए इंग्लिश सिखाई थिले चलो यार आंसर करो मिस्टर सोमरवेल मिस्टर वर्ल्डन मिस्टर चर्चिल मिस्टर लैटिन किए थिले को 49 नंबर चलो आंसर आसीगला ए सुस्मिता ए राकेश ए मामुनी ए सुमित ए स्वाति ए मात्र 8-9 जन ही अच्छ ठीक अच्छे जिते जन अच्छे से आम प्रैक्टिस करवा तो चलो समस्त ठीक अच्छे 49 नंबर आंसर हूँ ए ओके नेक्स्ट इन द ballad of Father Gilligan God is described as someone who God is described God को किपर describe करा जाए someone who is distant pities the least of things is cruel is forgetful तो गॉड किए गॉड को किपर डिस्क्राइब करा जाए 48 नंबर को 48 नंबर प्रथम आंसर आसी जाउची बी 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 चलो अन्य माने बी बी चलो समस्त ठीक अच्छे बी अच्छे राइट आंसर पिट इज द लिस्ट ऑफ थिंग्स समस्त ठीक अच्छे 48 नंबर आंसर है बी नेक्स्ट द ग्रैंडमदर्स लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन
anger, song, silent prayer, complain. ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ସ୍ଲିପ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲା, କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା? ଆଙ୍ଗର, ସଙ୍ଗ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ରେୟାର, କମ୍ପ୍ଲେନ୍। 47 आंसर। चलो आसीगलानी आंसर सी 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 समस्त आंसर ठीक अच्छी। 47 नंबर आंसर होची साइलेंट प्रेयर। ओके समस्त ठीक अच्छे। नेक्स्ट, स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल बाय स्टीव जॉब्स वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल बाय द गवर्नमेंट, बिल गेट्स, हिज फैमिली, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 46 किए तंग फायर्ड करते माने चाकरी बाहर कर देते? 46 नंबर को ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलो अन्य माने ऑप्शन डी। चलो समस्त ठीक अच्छे। 46 नंबर ऑप्शन डी हो राइट आंसर। चलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही चाकरी बाहर कर देते, फायर कर देते। ओके चलो ठीक अच्छे। श्री महाराणा spent a dash sleepless night because Sri Maharana spent a sleepless night because the minister's cap was missing. He was sick. He was excited about the function. He was counting money. कहीं से स्लीपलेस नाइट बीते माने गोटे अनिद्रा रही राति, कारण कौन थिला? 45 नंबर। चलो फटाफट आंसर करो। कहीं से अनिद्रा थे, स्लीपलेस नाइट गोटे अनिद्रा राति से बीते। चलो सी, ही वाज एक्साइटेड अबाउट द फंक्शन, फंक्शन को लेकिन से एक्साइटेड थे, से अनिद्रा थे राति। समस्त सी कहूच। ही वाज एक्साइटेड अबाउट द फंक्शन, फंक्शन पे से एक्साइटेड थे, से राति स्लीपलेस नाइट से बीते थे। 45 नंबर। अच्छा ऑप्शन ए देखो, द मिनिस्टर्स कैप वाज मिसिंग, मिनिस्टर को कैप मिसिंग थिला, द मिनिस्टर्स कैप वाज मिसिंग, एटा होची राइट आंसर। ठीक अछि। आउट ऑफ सिलेबस एटा। नेक्स्ट करो, इन मनी मैडनेस लॉरेंस सेज इफ ए मैन हैज नो मनी द वर्ल्ड विल गिव हिम रेस्पेक्ट, फूड, ए लिटिल ब्रेड, बट विथ ग्रेट ह्यूमिलेशन, शेल्टर। चलो एटा करो। 44 नंबर करो, द वर्ल्ड विल गिव हिम, वर्ल्ड ताकू देव कौन देव? रेस्पेक्ट, फूड ना ए लिटिल ब्रेड, बट विथ ग्रेट ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलिएशन ना शेल्टर। चलो ऑप्शन सी आसूची समस्त, ऑप्शन सी आसूची, यस सी हूँ राइट आंसर। ए लिटिल ब्रेड बट विथ ग्रेट ह्यूमिलिएशन। हाँ तो सी ही ठीक आंसर। ओके नेक्स्ट, act in the living present, this encourage action without delay, procrastination, planning for the far future, regretting the past।
act in the living present या माने कौन दिस एनकरेज ए सेंटेंस टी काहाको एनकरेज करे एक्शन विदाउट डिले लेट न करी एक्शन बा शीघ्र यथा शीघ्र एक्शन करवा प्रोक्रास्टिनेशन ना प्लानिंग फॉर द फार फ्यूचर ना रिग्रेटिंग द पास्ट ऑप्शन सी आसुची ए आसुची 43 नंबर ऑप्शन ए हूँ ठीक आंसर एक्शन विदाउट डिले एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट में बर्तमान रही काम कर एक्ट माने कर विदाउट डिले एक्शन विदाउट डिले तो ए हूँ राइट आंसर ए हूँ राइट आंसर एक्शन विदाउट डिले न करके एक्शन करवा ना यथा शीघ्र एक्शन करवा ठीक अच्छे ए हूँ राइट आंसर तापरे नेक्स्ट What did Father Gilligan find when he reached the sick man's house? What did the Father Gilligan find when he reached the sick man's house? The man was waiting for him. The man was very angry. The man had died as merry as a bird. The house was empty. What did Father Gilligan find when he reached the sick man's house? ଯେତେବେଳେ ସେ sick man's house ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ऑप्शन सी 42 ऑप्शन सी आसुची समस्तଙ୍କର ऑप्शन आसुची सी तो ठीक अच्छे समस्त आंसर ठीक अच्छे द मैन हाड डाइड आज मेरी आज ए बार तो ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी हूँ ठीक आंसर ठीक अच्छे In television, Dhal says reading books makes the mind feel full of dragon, gypsies, queens and whales. ना ऑप्शन भी अच्छे टायर्ड ना बोर्ड ना confused. चलो यार आंसर करो 41 क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रे ध्यान दियो ऑप्शन ए आसुची ऑप्शन सी आसुची बोर्ड Dhal says reading books make the mind feel bored. मामुनी बी सी कहूँ बोर्ड हो जाए बही पढ़ले बोर हो जावा 41 सी बी दिनेश प्रधान सी 41 सी चलो अन्य माने ए हेबा चलो ठीक आंसर होची ऑप्शन ए जी कहूच ठीक कहूच ठीक अच्छे ए ऑप्शन ए ही ठीक आंसर ठीक अच्छे बही पढ़ा मान हो फुल ऑफ ड्रैगन्स गिप्सेस क्वींस एंड वेल्स ठीक अच्छे ए 41 आंसर थिला ए नेक्स्ट 40 नंबर कौन ए जो मैंने कहूँ ठीक कहूच A person who takes all the credit is called dash. In the magic of teamwork, a person who takes all the credit is called a leader, a team player, an innovator, a credit grabber.
हाँ तो जी सब जगह क्रेडिट नहीं जाए कौन कह जाए लीडर कह कि ना टीम प्लेयर कह ना इनोवेटर कह ना क्रेडिट ग्राबर कह चलो ऑप्शन ही जना पड़ जाए आंसर कौन 40 नंबर डी ए हम ए लीडर हम जी सब जगह क्रेडिट निजे नहीं जाए लीडर कह जाए ए पर्सन हु टेक्स ऑल द क्रेडिट इज कॉल्ड जी सब जाक क्रेडिट नहीं जाए जे मु करी कौन कह ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर ए क्रेडिट ग्राबर जे सब क्रेडिट निज आड़ को टाणी निजे नहीं जाए ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर बी नुहे ए टीम प्लेयर ना टीम प्लेयर नुहे ठीक अच्छे तो ए ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर ए क्रेडिट ग्राबर जे सब चाहे क्रेडिट नापी ठीक अच्छे नेक्स्ट in on examination what was the benefit Churchill got by learning English पढ़िबा द्वारा से की बेनिफिट गुड़िक पाइथिले he got a job in a bank he gained an advantage over those who only knew Latin or Greek he become a poet he moved to America तो तांकर इंग्लिश पढ़िबा द्वारा की बेनिफिट से पाइथिले 39 क्वेश्चन कर ठीक अच्छे यार आंसर हूँ बी ही गेन एन advantage ओवर दोज हु ओनली न्यू लाटिन और ग्रीक है गोटे advantage मिलला जो मैंने केवल लाटिन और ग्रीक ही शिखी चलो ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर ओके नेक्स्ट 38 कर इन ए स्लम ऑफ लाइफ द हार्ट इज कंपेयर टू हार्ट को कहा सहित कंपेयर करा जायछि ए क्लॉक ए बर्ड मफल ड्रम्स एन ओशन हार्ट को कहा सहित कंपेयर करा जायछि कहा सहित आसीगला आंसर सी 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 चलो माने सी तो ठीक आंसर होची ऑप्शन सी जो मैंने कहूँ ठीक अच्छे ऑप्शन सी होचे मफल ड्रम्स ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हाट वाज द सेकेंड विश इन द मंकीज पा सेकेंड विश टी कौन थिला फॉर वेल्थ फॉर ए न्यू हाउस फॉर देयर सन टू कम बैक टू लाइफ फॉर द प टू डिसअपियर 37 सेकेंड विश टी कौन थिला 37 आसीगला सी सी इटा भी सी सी ओके ठीक अच्छे समस्त आंसर ठीक अच्छे ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर विश कौन थिला सेकेंड विश टी कौन थिला फॉर देयर सन टू कम बैक टू लाइफ ओके नेक्स्ट 36 स्टीव जॉब्स says stay hungry stay foolish was a quote from the whole earth catalog his father his teacher his a famous book यही कोटटी केउठु आसीथिला ए कोट जो लिखा जाए स्टे हंग्री स्टे फुलिश केउठु आसीथिला को 36 द होल अर्थ कैटालॉग हिज फादर हिज टीचर ए फेमस बुक केउठु आसीथिला चलो ऑप्शन आसीगला 36 रो स्वाति ए सस्मिता ए जितु बकुल ए दिनेश ए मामुनी ए बारिक ए चलो समस्त आंसर 36 रो ए आसुच तो ए ठीक अच्छे द होल अर्थ कैटालॉग ए हूँ राइट आंसर ठीक अच्छे समस्त नेक्स्ट 35 इन द मास्टरी ऑफ द मिसिंग कैप हाउ डिड श्री महाराणा एक्सप्लेन द थेफ्ट टू द मिनिस्टर किपर से एक्सप्लेन करथिले he said a devoted fan took it as a memento he told the truth about the monkey he said a political rival stole it he said it flew away in the wind 35 चलो आंसर आसीगला ए ए
35A चलो समस्त आंसर ठीक अच्छी ही सेड ए रेपुटेड फैन टू किट एज ए मोमेंटो चलो ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर ओके समस्त ठीक अच्छे व्हाट इज द सेंट्रल मेसेज ऑफ मनी मैडनेस व्हाट इज द सेंट्रल मेसेज ऑफ मनी मैडनेस सेंट्रल मेसेज टी कौन थिला वी शुड अर्न as much as possible money is a gift from god everyone should be rich we must regain our sanity about money before it kills us 34 मनी मैडनेस रो प्रकृत मेसेजटा कौन थिला सेंट्रल मेसेज कौन थिला 34 आंसर आसीगला डी 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 समस्त आंसर ठीक अच्छी राकेश कहीं गला खाईगला वी मस्ट regain our sanity about money before it kills us समस्त आंसर ठीक अच्छे ऑप्शन डी हो ठीक आंसर ओके नेक्स्ट 33 who came to help the dying man while the priest slept who came to help the dying man while the priest slept a doctor a neighbor an angel in the form of the priest brother किए आसीथिला हेल्प करिया पे 33 आंसर 33 अच्छा सी 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 जितेबाला प्रिस्ट जनक स्लेप्ट शोई पड़ा से टाइम किए आसीथिला समस्त आंसर सी सब ठीक अच्छे ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर एन एंजल इन द फॉर्म ऑफ द प्रिस्ट ओके समस्त ठीक अच्छे नेक्स्ट 32 इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी व्हाई डिड द ग्रैंडमदर डिसलाइक द सिटी स्कूल ग्रैंडमदर कहीं सिटी स्कूल को डिसलाइक करुले ना पसंद करुले देयर वाज नो रिलीजियस टीचिंग इट वाज टू फार सी डिड नॉट लाइक द टीचर्स द फीस वेयर टू हाई कहीं से पसंद करुन सिटी स्कूल को 32 आंसर ए ए ए 32 आंसर देयर वाज नो रिलीजियस टीचिंग चलो समस्त आंसर ठीक अच्छी ए हूँ राइट आंसर 30 in on examination the boys who were top of the class learned English only Latin and Greek mathematics and science history on examination chapter रे the boys who were top जो माने टॉप करुथिले क्लास रे से माने लर्न शिखुथिले कौन शिखुथिले इंग्लिश ओनली लाटिन एंड ग्रीक मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड हिस्ट्री केना ठीक है बाको या भितरु से माने कौन शिखुथिले इंग्लिश केवल इंग्लिश ना लाटिन और ग्रीक ना मैथमेटिक्स और साइंस ना हिस्ट्री 31 रो क्वेश्चन को 31B 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 चलो समस्त आंसर ठीक अच्छे लाटिन एंड ग्रीक ओके नेक्स्ट व्हाट डिड रोल्ड धल नोटिस अबाउट चिल्ड्रेन इन एवरी हाउस ही विजिटेड से कौन नोटिस कले है कौन से नोटिस कले जिते से माने से चिल्ड्रेन को विषय कौन नोटिस कले इन एवरी हाउस ही विजिटेड सबू हाउस को से विजिट कला बेले कौन नोटिस कले दे वर रीडिंग दे वर प्लेइंग स्पोर्ट्स दे वर लोलिंग एंड स्टेयरिंग एट द स्क्रीन दे वर हेल्पिंग पेरेंट्स से कौन नोटिस कले बा कौन देखले 30 नंबर से देखिले या कौन देखिले को चलो कमेंट करो आंसर ऑप्शन सी सी एस दी जण आंसर कमेंट कले आउ बाकी माने 30 नंबर आंसर सी हो राइट आंसर ठीक अच्छे जो मैंने सी कहो ठीक हो दे वर लोलिंग एंड द स्टेयरिंग एट द स्क्रीन ओके ठीक अच्छे स्टीव जॉब्स थर्ड स्टोरी वाज अबाउट स्टीव जॉब कर थर्ड स्टोरी कौन थिला क्या विषय थिला डेथ लव एंड लॉस कनेक्टिंग द डॉट्स कैलीग्राफी थर्ड स्टोरी टी कौन थिला 29 क्वेश्चन को क्या विषय थिला
चलो दिनेश प्रधान ए, स्वाति ए, जितु बकुल ए, समस्तंकर आंसर ठीक अच्छे डेथ है ए जो मैंने कौच ठीक कौच 8 जन अच्छा कि 8टा कमेंट 8टा आंसर ही आसुनी। चलो ठीक अच्छे। फादर गिलिगन कॉल हिमसेल्फ पुअर बिकज से निज को पुअर कहते कहीं कारण ही वाज फिजिकली वीक एंड स्पिरिचुअली टायर्ड, ही हैड नो मनी, ही हैड नो फैमिली, हिज हाउस वाज स्मॉल। से कहीं निज को पुअर पुअर कहते। 28 क्वेश्चन नंबर 28। हाँ तू भी कह ठीक अच्छे। ए मारने लगो। चलो ए झगड़ा लगनी ना ऑनलाइन ले पिटी। चलो ए समस्त ए आंसर ठीक अच्छे। ए हूँ राइट आंसर 28। ही वाज फिजिकली वीक एंड स्पिरिचुअली टायर्ड। ओके समस्त ठीक अच्छे। व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू ड्यूरिंग हर लास्ट आवर्स। व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू ड्यूरिंग हर लास्ट आवर शेष समय से कौन करते। सी स्टॉप टॉकिंग एंड प्रेड साइलेंटली व्हाइल काउंटिंग beats, she talked to everyone, she complained about her illness, she slept peacefully। शेष समय से कौन करते ग्रांडमदर कौन करते। चलो यार आंसर आसीगला ए 27 ए 27 ए। चलो समस्त आंसर ठीक अच्छी। 27 आंसर हूँ ए। नेक्स्ट व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ श्री महाराणा। प्रोफेशन कौन थिला। ए स्कूल टीचर, ए लॉयर, ए गवर्नमेंट डॉक्टर, ए वेल टू डू विलेज और एस्पिरिंग पॉलिटिशियन। तांकर प्रोफेशन कौन थिला। श्री महाराणा प्रोफेशन कौन थिला। चलो आंसर आसीगला डी 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 स्कूल टीचर ना लॉयर ना गवर्नमेंट डॉक्टर ना ए वेल टू डू विलेजर और एस्पिरिंग पॉलिटिशियन। तो आंसर हम ऑप्शन डी जो मैंने डी कहो ठीक कहो। ओके ऑप्शन डी हूँ ठीक आंसर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। बी नॉट लाइक डम्प ड्रिवेन कैटल इन व्हिच पोएम इज दिस लाइन फाउंड। ए लाइन टी क्यों पोएम रे अच्छी। मनी मैडनेस, ए स्लैम ऑफ लाइफ, डैफोडिल्स, टेलीविजन। तो क्यों पोएम रे ए लाइन टी अच्छी। 25 क्वेश्चन कर। राकेश मझे कड़े पढ़ी बी 25 बी चलो समस्त आंसर ठीक अच्छे। इस्लाम ऑफ लाइफ ठीक है। 25 नंबर आंसर होची बी। समस्त आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट जॉब सेज योर वर्क इज गोइंग टू fill a large part of your life, so you must work for money only, love what you do, change job frequently, listen to your parents advice। जॉब्स कहती योर वर्क इज गोइंग टू fill a large part of your life, so you must dash। बी 24 आंसर। चलो 24 आंसर करो। बी आंसर आसुचे
ठीक अच्छे लव व्हाट यू डू बी हूँ राइट आंसर ठीक अच्छे बी हूँ राइट आंसर जो मैंने बी कह ठीक कह नेक्स्ट 23 द 200 pounds in the monkey's paw came as compensation for their son's death, a lottery win, a gift from a friend, a loan from the bank. 200 ପାଉଣ୍ଡ କାହା ବଦଳରେ ଆସିଥିଲା କମ୍ପେନସେସନ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ସନ୍ସ ଡେଥ୍ ନା ଲଟେରୀ ୱିନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଠାରୁ ଗିଫ୍ଟ ଥିଲା ନା ଲୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା କୁହ ଚାଲ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଉଛି ଏ ଚାଲ ସବୁ ତ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବୋଲି ନାଇଁ ତ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ओके जो मैंने ए कह ठीक आंसर कह समस्त ठीक अच्छे नेक्स्ट 22 सैम्पिट्रोडा मेंशन्स व्हाट द आई मेंटालिटी कम्स फ्रॉम सैम्पिट्रोडा मेंशन्स व्हाट द आई मेंटालिटी कम्स फ्रॉम मॉडर्न एजुकेशन फॉरेन इन्फ्लुएंस आवर ट्रेडिशनल हेरिजिकल सिस्टम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मॉडर्न एजुकेशन रू आई आसुची ना फॉरेन इन्फ्लुएंस ना आवर ट्रेडिशनल हेरिजिकल सिस्टम ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चलो ऑप्शन देखी कर कहन केनु देखुन बहिरू के चलो जेने कहून तो देखी कर हो पछे 22 नंबर चलो समस्त आंसर ठीक अच्छी ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर 21 व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द ग्रैंडमदर का हैप्पीएस्ट हाफ आवर कौन थिला व्हेन शी वाज प्रेइंग व्हेन शी वाज फीडिंग द स्पैरोज व्हेन शी वाज टॉकिंग टू द ग्रैंडसन व्हेन शी वाज स्पिनिंग द व्हील तांकर हैप्पीएस्ट समय तांकर हैप्पीएस्ट समय केमती थिला 21 क्वेश्चन चलो समस्त ऑप्शन आसी जाउची ऑप्शन बी चलो बी होचे ठीक आंसर व्हेन शी वाज फीडिंग द स्पैरोज चलो ठीक अच्छे नेक्स्ट 20 चलो 20 क्वेश्चन है फटाफट करदे चर्चिल वाज प्लेस इन द लोएस्ट डिविजन एट हारो व्हाट वाज द डिविजन कॉल्ड लोएस्ट डिविजन रे से डिविजन कौन कह जाए the third the last bench the special class the fourth 20 को 20 नंबर आंसर को जो लोएस्ट थिला से क्यों डिवीजन आसुची चल चल आंसर को फटाफट शीघ्र शीघ्र सरेवा चैट जीपीटी ऑन अच्छा चलो चैट जीपीटी किसी तो काम आसला तुम मानकर ऑप्शन डी ऑप्शन डी 20 नंबर चलो समस्त आंसर ठीक अच्छी ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर इन टेलीविजन रोल्ड दाल सजेस्ट चिल्ड्रेन शुड स्पेंड देयर टाइम स्लीपिंग प्लेइंग वीडियो गेम्स रीडिंग बुक्स वाचिंग एजुकेशनल फिल्म्स तो चिल्ड्रेन तांकर टाइम स्पेंड करिए कि स्लीपिंग ना प्लेइंग वीडियो गेम्स ना रीडिंग बुक्स ना वाचिंग एजुकेशनल फिल्म्स चलो 19 नंबर करो उन्नीस नंबर फटाफट करो 19 नंबर वाचिंग एजुकेशनल फिल्म्स ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन सी
चलो यार ठीक आंसर होची रीडिंग बुक्स है सी होची राइट आंसर डी नुहे है तो चिल्ड्रेन तांकर समय किपरि बितेबे रीडिंग बुक्स होची ठीक आंसर ओके जो मैंने बी सॉरी सी कहूछ ठीक कहूछ ओके हाउ डिड हर्बर्ट डाई किपरि मरिथिले caught in the machinery at work he fell from a tree in a car accident of a sudden illness किपरि मरिथिले कुह फटाफट 18 नंबर एत सहजिया क्वेश्चन एथिपाई कौन देखा पड़ो तुम मानक बहुत सहजिया क्वेश्चन अच्छे जार स्टोरी मन थी से आराम से कहीदे पार चार्ट जीपीटी देखा दरकार नहीं बही देखा दरकार नहीं किसी भी दरकार नहीं 18 नंबर आंसर चलो समस्त आसूचे यह हूँ राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट डिड द ग्रैंडमदर कैरी विथ हर टू फीड द विलेज डॉग्स विलेज डॉग को खुआइबा ग्रैंडमदर साथ कौन आनी स्टेल चपातीज फ्रेश ब्रेड बिस्कुट्स ग्रेन्स चलो 17 नंबर आंसर हूँ ए जो मैंने कहो ठीक आंसर है ए इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट 16 नंबर व्हाट शुड वी लीव बिहाइंड फॉर अदर्स व्हाट शुड वी लीव बिहाइंड फॉर अदर्स अन्य मानक कौन छाड़ी जीवा मनी एंड गोल्ड बुक्स एंड थ्योरीज फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स चलो 16 नंबर आंसर कर अन्य मानक कौन छाड़ी जीवा ए जीतू आ सस्मिता काण चली तुम मानकर मारपीट कहीं हो चलो यार आंसर हो 16 नंबर ठीक आंसर होची ऑप्शन सी फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम है जो मैंने सी कहूच ठीक कहूच ओके 15 नंबर व्हाट डिड फादर गिलिगन डू व्हेन ही वेक अप आफ्टर हिज लॉन्ग स्लीप जिते लंबा समय शोला पर उठिले कौन है ही एट हिज ब्रेकफास्ट he immediately rode his horse to the sick man's house he went back to sleep he started praying in the church 15 नंबर आंसर करो 15 नंबर 15 नंबर समस्त ठीक अच्छे आंसर हूँ बी राइट आंसर हूँ बी चलो 14 नंबर द मिनिस्टर वाज द मिनिस्टर ऑफ डैश केन मिनिस्टर थिले मिनिस्टर जनक क्यों मिनिस्टर थिले एजुकेशन फाइनेंस हेल्थ ना फिश एंड पब्लिक रिलेशन क्यों मिनिस्टर थिले 14 नंबर आंसर मिनिस्टर जनक क्यों मिनिस्टर थिले एजुकेशन फाइनेंस हेल्थ फिश एंड पब्लिक रिलेशंस 14 नंबर आंसर डी 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 समस्त आंसर 14 नंबर ऑप्शन डी राइट आंसर चला डी हूँ ठीक आंसर समस्त ठीक अच्छे नेक्स्ट 13 नंबर व्हाट वाज द ग्रैंडमदर्स रिएक्शन टू द ऑथर गोइंग अब्रोड जो ऑथर अब्रोड गले से ग्रैंडमदर को रिएक्शन कौन थिला सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल सी क्राइड ए लॉट सी फॉरगॉट विथ हिम सॉरी सी फॉट विथ हिम सी एनकरेज्ड हिम टू स्टे बैक जिते ग्रैंडमदर को रिएक्शन कौन थिला जिते ऑथर अब्रोड गले सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल टिके हेले भी सेंटिमेंटल हेले नहीं सी क्राइड ए लॉट बहुत कांदिले सी फॉट विथ हिम सहित झगड़ा कले सी एनकरेज हिम टू स्टे बैक सी रहीजा एनकरेज कले तो ठीक आंसर हो यस ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर जो मैंने ए कह ठीक कह नेक्स्ट व्हाई डिड चर्चिल फाइंड द लैटिन पेपर सो डिफिकल्ट कहीं से लैटिन पेपर को बहुत डिफिकल्ट लगे ही अराइव लेट फॉर द एग्जाम से एग्जाम बहुत लेट्रे पहुँचले ही कुड नॉट इवन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन से प्रथम क्वेश्चन भी आंसर कर ही फॉरगेट हिज पेन से पेन भूली जाते द पेपर वाज इन ग्रीक पेपर टी ग्रीक रे थिला 12 नंबर आंसर
12 नंबर आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन डी कहूँ। अरे लाटिन पेपर थिला लाटिनटा से ग्रीक पेपर कहीं थी द पेपर वाज इन ग्रीक रे थिला बोली 12 नंबर ठीक आंसर होची ऑप्शन बी ही कुड नॉट इवन आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन ही आंसर से दे पारि नथिले। हाँ लाटिन रे कमजोर थिले से ठीक अछि लाटिन में लाटिन भाषा रे व्हाट इज द पोएट अफ्रेड ऑफ ए जगह ए पोएम रे मनी मैडनेस रे पोएट क्योंथि पे डरू थिले थिप्स बिकमिंग ए बेगार चोर मान ना बिकमिंग ए बेगार गोटे बेगार हो बोली ना मनी मैड कलेक्टिव सोसाइटी ना बैंक्स क्लोजिंग डाउन क्यों सी अफ्रेड ऑफ थिले माने डरू थिले। चलो 11 नंबर आंसर कहीं से डरू थिले क्यों कथा को नहीं मन में डर थिला। चलो बी बी सी बी चलो यार ठीक आंसर होची 11 नंबर ठीक आंसर होची सी द मनी मैड कलेक्टिव सोसाइटी तो सोसाइटी मनी माने पैसा पे पागल थिला सेति सेटा होची तांग पे डर थिला बिकम ए बेगार से गोटे बेकारी हो बोली डरू थिले। ऑप्शन सी होची राइट आंसर 11 नंबर आंसर होची सी द मनी मैड कलेक्टिव सोसाइटी तो सोसाइटी गोटे टंका पागल थिला से डर थिला से जिनस ठीक अच्छे। नेक्स्ट व्हाट वाज द फर्स्ट विश मेड विथ द मंकीज पॉ द्वारा प्रथम विश कौन थिला फॉर 200 पाउंड्स फॉर ए न्यू हाउस फॉर 500 पाउंड्स फॉर हिज सन्स हेल्थ प्रथम विश टी कौन थिला फर्स्ट विश 10 नंबर क्वेश्चन आंसर कुह 10 नंबर आंसर कौन थिला ऑप्शन ए चलो ऑप्शन 1 प्रथम विश टी कौन थिला ए चलो समस्त ठीक अच्छे ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर अच्छा ए हम ना 10 नंबर ठीक अच्छे ए हम चलो 9 नंबर करो स्टीव जॉब्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ व्हिच कॉलेज से क्यों कॉलेज ड्रॉप कर दिया जाता ड्रॉप करते स्टीव जॉब्स ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम व्हिच कॉलेज हार्वर्ड रीड कॉलेज स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड 9 नंबर आंसर 9 नंबर आंसर आसीगला बी बी चलो बी बी चलो समस्त ठीक अच्छी रीड कॉलेज समस्त ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बी हूँ ठीक आंसर चलो बी जो मैंने कहो ठीक हो ओके। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रोल्ड हॉल व्हाट डज टेलीविजन डू टू ए चाइल्ड्स माइंड रोल्ड हॉल का अनुसार टेलीविजन कौन कर गोटे चाइल्ड्स माइंड रो मेक्स इट सॉफ्ट एज चीज मेक्स इट शार्पर हेल्प्स इन लर्निंग साइंस इनक्रीज इमेजिनेशन टेलीविजन टा गोटे चाइल्ड रो माइंड को कौन कर दिए चलो 8 नंबर ठीक आंसर हो चलो जो मैंने एक हो ठीक हो मेक इट सॉफ्ट एज चीज चलो 7 नंबर हु वाज द थीप इन द स्टोरी द मास्टर ऑफ द मिसिंग कैप एथरे थीप किए थिला ए पॉलिटिकल राइवल श्री महाराणा द मिनिस्टर हिमसेल्फ द मंकी स्नैप्ड झंडो किए थिला एथरे थीप चलो 7 नंबर चलो सहज क्वेश्चन टा नहीं मंकी है गोटे माकड़ थिला ओके 6 नंबर को लाइफ इज रियल लाइफ इज योर नेस्ट दिस लाइन इज फ्रॉम व्हिच पोएम ऐसे क्वेश्चन रिपीट है लगे मनी मैडनेस ए साउंड ऑफ लाइफ टेलीविजन द बलाड ऑफ फादर गिलियन क्यों पोएम रो थिला ए लाइन टी
ऑप्शन बी 6 नंबर ऑप्शन बी चलो समस्त ठीक अच्छे ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर जो मैंने ऑप्शन बी कह 5 नंबर 5टा क्वेश्चन अच्छे शीघ्र शीघ्र सारी दबा some Pitoda says that in an organization everyone should be seen as a team of equals, an orchestra, bosses and workers, competitors, part of a machine. Everyone should समस्त को देखा जीव समस्त को क्यों रूप में निया जीव टीम ऑफ इक्वल्स बसेस एंड वर्कर्स बस एवं वर्कर मान कह कंपिटिटर्स कह ना पार्ट ऑफ ए मशीन कह चलो 5 नंबर आंसर करो फटाफट छः नंबर 5 नंबर आंसर करो 5 नंबर अरे कहीं गले सब 5 नंबर ए चलो 5 नंबर ए हूँ राइट आंसर 5 नंबर ए कह ठीक कह 5 नंबर ए हूँ राइट आंसर चलो नेक्स्ट व्हाई वाज द प्रीच सो एग्जॉस्टेड कहीं प्रीच जनक बहुत एग्जॉस्टेड हो गले ही वाज फास्टिंग फॉर मेनी डेज ही वाज वॉकिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस ही वाज बिल्डिंग ए न्यू चर्च हाफ हिज फ्लॉक वेयर इन देयर बीड्स और अंडर ग्रीन सॉड 4 नंबर आंसर को दिनेश प्रधान डी व्हाई वाज द प्रीच सो एग्जॉस्टेड 4 नंबर डी चलो ऑप्शन डी ठीक अच्छे जो मैंने डी कह चलो स्वाति दिनेश मामुनी समस्त ठीक अच्छे चलो 3 नंबर व्हाट डिड स्टीव जॉब्स लर्न फ्रॉम द कैलीग्राफी क्लास दैट ही लेटर यूज्ड in the Mac. How to build hardware, serif and sans serif typeface, business management, marketing strategies. से कौन सीखी थी 3 नंबर 3 नंबर आंसर को 3 नंबर ठीक आंसर होची बी ऑप्शन बी जो मैंने कह ठीक कह 3 नंबर ठीक आंसर होची बी हाँ चल Churchill felt that examiners were interested in finding out his physical strength, what he knew, what he did not know, his poetic skill. Examiner were interested in finding out. Examiner माने कौन खोजिया पे बेसी इंटरेस्टेड थिले his physical strength ना what he knew ना what he did not know his poetic skills 2 नंबर चलो 2 नंबर ठीक आंसर हो ऑप्शन सी व्हाट ही डिड नॉट नो से कौन जान नथिले ताकू ही एग्जामिनर माने खोजिया पे बेसी इंटरेस्टेड थिले ठीक अच्छे 2 नंबर आंसर हो ऑप्शन सी ओके लास्ट क्वेश्चन पर म्यूजिक वाज कंसिडर्ड बाय द ग्रैंडमदर टू बी द मोनोपोली ऑफ सेंट्स एंड गॉड्स हार्लॉट्स एंड बेगर्स कॉमन पीपुल ना किंग्स एंड क्वींस लास्ट क्वेश्चन कह दिया 1 नंबर आंसर कह 1 नंबर ए कहूँ स्वाति सी है म्यूजिक अच्छा इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी म्यूजिक वाज कंसिडर्ड म्यूजिक को कंसिडर करा जाए बाय द ग्रैंडमदर टू बी द मोनोपोली ऑफ सेंट्स एंड गॉड्स हार्लॉट्स एंड बेगर्स कॉमन पीपुल
किंग्स एंड क्वीन यार ठीक आंसर हो एक नंबर ठीक आंसर हो चलो ऑप्शन ए ऑप्शन बी केनटा ठीक आंसर होगा ठीक आंसर हो बी ठीक अच्छे राइट आंसर होची बी जो मैंने बी कहे ठीक कहे हार्लट्स एंड बेगर्स चलो आम 60टा क्वेश्चन कले प्लस 60टा क्वेश्चन कले प्रोज पोएट्री नहीं कर आउ प्लस 8टा ग्रामर क्वेश्चन कले ठीक अच्छे तुम एत मात्रा आसिल जे बहुत खुशी लगला पुणी आम काली ग्रामर क्वेश्चन करवा ना कौन कह चलो जी भी आसिल समस्त को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अच्छे आज क्लास ये सारिबा समस्त को परीक्षा गुड लक ओके हाँ मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल आउ जब क्लास करवा पुणी एथर डिस्कसन करवा ठीक अच्छे ओके समस्त गुड नाइट थैंक यू टेक केयर बाय बाय